What if I tell you that you already have a superpower? No, I'm not referring to some fancy or magic stuff. I'm talking about your superpower, that is immunity. Immunity एक invisible shield की तरह काम करता है, protecting you 24/7 from bacteria, viruses and lifestyle disorders. But the big question here is, are you protecting your protectors? Hi, I am Kinjal, a qualified nutritionist and a lifestyle coach. Welcome to our YouTube channel Optima Remedy. And today we are unlocking the secrets of your immunity, how it works, signs and symptoms which tells you that it needs help, and most importantly, how you can power it up naturally. Let's start with the basics and understand what is immunity. So basically, immunity is your body's defense mechanism, एक intelligent body system जो डिटेक्ट करता है harmful invaders like bacteria, viruses या fungus and it fights them off. Basically there are two types of immunity. Innate immunity जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, our first line of defense which is our skin, the mucous membrane and certain body cells, and adaptive immunity which is more powerful. It has memory and it is produced after an attack of infection or vaccination. Imagine these things as your army, navy and air force which is working together to protect you and keep you safe. Let's understand what are some signs which indicates that your immunity is weak. First is falling sick frequently. Those individuals who catch cough, cold, infections very frequently, that indicates that their immunity is low. Second is your wound healing is delayed. अगर कहीं कोई एक्सटर्नल या इंटरनल घाव लगती है तो उसको हील होने में थोड़ा समय लगता है, बट वो नॉर्मल समय से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है देन इट इज़ एन इंडिकेशन दैट योर इम्यूनिटी इज़ वीक. थर्ड इज़ फीलिंग वीक एंड टायर्ड ऑल द टाइम विदाउट एनी रीज़न. If you have frequent and constant bloating, gas and other gut health issues, then that also indicates you might have poor immunity. Skin breakouts, frequent allergies, hair fall or brittle nails may also indicate low immunity. If you also relate with these symptoms, then it's time for some tender loving care for yourself. So the question is, how do you boost your immunity naturally? अगर आप ये सारे सिम्टम्स को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हो, स्मार्टली उनको समझ लेते हो, देन डाइट कैन हेल्प यू अ लॉट. बट in case if you are ignoring and it becomes too late, then you may have to take help of supplements. So let's understand how you can boost your immunity naturally. There are 4 things that you need to take care in your diet. Firstly, you have to make sure that there is enough vitamin C in your diet. So include amla, lemon, citrus fruits and colorful vegetables in your diet. Zinc is another important immunonutrient. So try and include pumpkin seeds, almonds, walnuts, dal, rajma, chole, all these things in your diet. Third is protein. Protein is the building block of our immunity. So don't forget your dal, paneer, curd, milk, nuts and sprouts in your diet. And last but not the least are anti-inflammatory herbs. So take support of haldi, black pepper, ginger, garlic, cloves. Include these things in your diet to boost up your immunity. 70% of your immune cells reside in your gut. So include prebiotic and probiotic foods, which is food for good bacteria and ultimately immunity. So you can include lots of fiber, onion, garlic, ginger, curd and other fermented foods in your diet. And most important point is sleep. We all know that रात को नींद में हमारी बॉडी डिटॉक्स करती है और उसके साथ साथ सारे सेल्स का रिपेयर एंड वेयर एंड टेयर भी होता है. So we need proper peaceful 7 to 8 hours of sleep at night to repair our immune cells as well. Sleep deprivation is equal to weaken immunity. Now one more point which is most important, I know you might not believe, but being physically active is very important to increase your immune power. Overdo नहीं करना है. Roughly 45 minutes of any kind of physical activity, be it walking, yoga, dance, pilates, swimming, anything that you like. एक्सरसाइज से हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारा WBC काउंट अच्छा रहता है और स्ट्रेस कम होता है. द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज
reduce your stress levels. जैसे ही हमारे बॉडी में मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, our cortisol level rises up. Higher the cortisol, it suppresses the immunity. आपने देखा होगा एग्ज़ाम के स्ट्रेस में कैसे बच्चों को बुखार आ जाता है, या फिर हमें ऑफिस में कोई डेडलाइंस हो और हमें लेट नाइट तक काम करना पड़े, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, the next day we are down, we feel tired, fatigued and we might catch cold and cough. So try deep breathing, meditation, simply take breaks from your daily tasks. अब ये सारी बात तो हुई जो आपको करनी है. There are certain things that you have to avoid as well. Consider this as a bonus tip. So इन 5 चीज़ों से हमें बहुत बचना ज़रूरी है. सबसे पहले processed foods and extra sugar का intake. These 2 things can reduce your immunity. Next is smoking and alcohol. As always, it is dangerous for each and everything, including your immunity. Third and the most common is crash dieting or skipping your meals. मोटिवेशन अच्छा है कि हमें वेट लॉस करना है या फिर हमें कोई पर्टिकुलर हेल्थ गोल अचीव करना है, बट उसके लिए अगर हम खाना पीना छोड़ दें अज्यूमिंग दैट हमारा वेट लॉस होगा, यू आर एक्चुअली डिप्राइविंग योर बॉडी फ्रॉम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट इम्यूनिटी पे आने ही वाला है. फोर्थ पॉइंट इज़ ओवर सैनिटाइजेशन. कोविड से हमें आदत हो गई है कि हर एक चीज़ के बाद सैनिटाइज़र यूज़ करो, विच इज़ एक्चुअली हार्मफुल. दैट टाइम इट वॉज एसेंशियल बिकॉज वी आर एक्सपोज टू कोविड-19 वायरस. बट अगर अभी से अब नॉर्मल है देन यू हैव टू ऑफकोर्स टेक केयर ऑफ योर हाइजीन, बट दैट डजंट मीन एवरी हाफ एन आवर और 1 hour यू कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स. एंड चेक योर विटामिन डी लेवल्स बिकॉज ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट, और एटलीस्ट उनका जो विटामिन डी का लेवल है वो इनसफिशिएंट है. एंड विटामिन डी हैज़ अ क्रूशियल रोल इन योर इम्यूनिटी. अगर आपके लेवल्स नॉर्मल से कम है, विजिट योर डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ प्रिस्क्राइब अ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन. और अगर बॉर्डर लाइन कम है या फिर नॉर्मल भी है, एक्सपोज योर बॉडी टू सनलाइट फॉर एटलीस्ट 20 minutes जिससे आपका लेवल नॉर्मल मेंटेन रहे. रिमेंबर, इम्यूनिटी इज नॉट बिल्ट इन अ डे, it builds every single day. So next time when someone asks you what is your superpower, say it's my immunity. But remember, every superpower needs daily care and maintenance. आप अपने आप को जितना नरिश करेंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जितना स्टेबल रहेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी पावरफुल होती जाएगी. If you found this video interesting, please hit the like button, share it with your loved ones, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Till then, take care of your immunity. Bye-bye.